Guys, I am a CPC certified coder and I completed my CPC in the year 2020 after joining as a medical trainee to this field. After 4 years, I have completed my CPC certification. So, in this today's session, we are going to learn about the basics medical terminology, anatomy, physiology required for medical coding. These are the topics involved in our basic medical coding. Okay, and when how to work medical coding management and how the medical law work when we are working for a medical coding company. That all the things I will tell you in this course when you opt for this course. Okay, guys, do you have any idea what is medical coding? No, ma'am. No. आपने कुछ तो सर्च किया होगा या वेबिनार ज्वाइन करने से पहले कि यार मेडिकल कोडिंग होता क्या है, एक बार हम पढ़ के तो देखते हैं. किसी को भी आइडिया नहीं है? मैम जो भी कुछ ऐसा डिजीज वगैरह होती हैं जो भी, तो उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हैं. आई थिंक दैट इज yeah, right. Actually, this is and the procedure. Okay. जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इंडिया में तो अभी ये चीज स्टार्ट नहीं हुई है. हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक मेडिकल रिकॉर्ड क्रिएट करता है, राइट? मेडिकल रिकॉर्ड क्रिएट करने के बाद में हमको जो भी कुछ इश्यूज है, लाइक चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को कुछ वर्टिगो हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, फीवर है, ओके, तो वो एक मेडिकल रिकॉर्ड में कन्वर्ट करता है चीजों को. और मेडिकल कोडर का काम क्या होता है, उस कंडीशंस को एक न्यूमेरिकल कोड में, अल्फा न्यूमेरिकल कोड में कन्वर्ट करना. ठीक है, दैट इज मेडिकल कोडिंग. टू कन्वर्ट द मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन इनटू अ कोड सेट. ओके, that is medical coding. So in medical coding, there are 4 W's. Okay, 4 W's means who means the provider. Okay, next is what and how. What and how means provider is giving some service to a patient. So what is our work? To convert that service into a particular CPT code and the ICD code. It means एक disease को हमें कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सर्विस को हमें 5 डिजिट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, एंड देन दैट मीन्स जब भी पेशेंट सर्विस रिसीव कर रहा है हमारे प्रोवाइडर से, आफ्टर दैट उस एमआर को हमको कन्वर्ट करना है मेडिकल कोड्स में. दैट इज द बेसिक मेडिकल कोडिंग. ओके, इज प्रोवाइडर इज नथिंग बट द डॉक्टर. ओके, in medical terms, in medical coding, we are telling the provider means the doctor is nothing but the what? Doctor. Okay, see here, there are 4 types of codes. Okay, one is ICD, second is CPT, HIPAA and HIPAA. Okay, first is HIPAA. I will tell you what is HIPAA. HIPAA is the Health Insurance Portability and Accountability Act. Okay, but why it is important? Because when the patient is seeing the doctor, okay, all the information of patient will be in the doctor's hospital. So there is no leak of that information from the hospital. मतलब उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन उस डॉक्टर के पास में क्या रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए, वहां से इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए. इसीलिए वहां पर एक हिप्पा एक्ट होता है. हिप्पा एक्ट क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट. ये हर जो भी आप मेडिकल कंपनी में जाओगे, आपको हिप्पा कंप्लायंस को मेंटेन करके रखना है. ओके, हियर 3 टाइप्स ऑफ कोड. ICD means International Classification of Disease. It means you need to convert any condition like fever or hypertension into the code, that is I10 or like R05. I will tell you the structure of ICD. Okay, next is CPT. CPT means when you are going to convert the procedure into a current procedure terminology. It means a 5 digit code. And जब भी ये डॉक्टर को सप्लाईज देता है, लाइक व्हील चेयर दे रहा है अगर पेशेंट को बैठने के लिए, तो वो चीजें काय में आती है? मेडिकल ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स में. इक्विपमेंट्स अगर उसने प्रोवाइड किया हुआ है उसको हम बोलते हैं HIPAA. दैट इज हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम. व्हाट इज मेडिकल कोडिंग? I have told you na previously. That is a process. Okay, every time patients receive professional health care in the physician office, hospital outpatient facility, and
ambulatory surgical center, the provider must document the services provided. It means it is creating a medical record in which diagnosis, procedures, medical services, equipment, physician notes, laboratory services, radiologic result, all will be there. When जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायरेक्टली हमको बोल देता है क्या आपको ये इसका इन्फेक्शन हुआ है, पहले वो सबसे पहले हमको एक लेबोरेटरी टेस्ट करने बताएगा, अदरवाइज आपको कुछ फ्रैक्चर हुआ है तो वो एक्सरे करने बताएगा। ये सारी चीजें काम में आती है मेडिकल कोडिंग के अंदर आती है। एंड मेडिकल कोडिंग का काम क्या है, आपको रेडियोलॉजिक सर्विस, लेबोरेटरी सर्विस को कन्वर्ट करना है एक पर्टिकुलर कोड में। See here are the provider and the payer. Okay. पेयर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। ओके, प्रोवाइडर इज नथिंग बट द डॉक्टर, ओके, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब तो इंडिया में मोस्टली लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते, लेकिन यूएस में पर्टिकुलर एक भी इंसान बिना इंश्योरेंस के रह नहीं सकता, उनको कंपलसरी है कि उनको इंश्योरेंस करवाना ही है। ओके, तो वहां पर जो भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको पे कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको पे नहीं करता है। अगर पे करता भी है तो सम परसेंट ऑफ अमाउंट एज पर उसके इंश्योरेंस के बेसिस पे उसको पे करना होता है, अदरवाइज सारा अमाउंट पेयर उसका जो होता है, लाइक यूएससी अगर पेयर है तो वो पे करेगा, इतना ह्यूमाना, देयर आर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर। ओके, तो वो पे करेंगी। See here, American Health Information Management Association is AHIMA and American Academy of Professional Coder is AAPC. I told you I have certification of CPC, right? So CPC certification comes under AAPC, that is American Academy of Professional Coder, and AHIMA certification are different, like CCS and many more certificates are there that comes under AHIMA. So you can opt for any certification like CPC or CCS or certified inpatient coder, like that. Okay, ma'am, please give next slide. Again next. See here, this is the flow chart. When we are going to the doctor's office, so first of all we are getting the appointment, right? We are not directly going to the doctor and see the doctor. We first take the appointment, and after that we are going to the hospital. So first of all, nurse, what she will do, she takes your vitals that comes under BP and like your ROS means your system, it's properly working or not working. Okay, after that you will see the physician. What will do, he will give you some lab test and some RX. RX is nothing but they provide some medications. Prescriptions. Okay. Yeah, prescription. That comes under the medical record. Medical record, after giving medical record, what he will do, he will go to the laboratory and do the test. Okay, lab technician will take his blood and do some tests. After that, he will go to the pharmacist and take the medications. And after this medical record creation, that medical coding, what do exactly, जब वो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, वो रिकॉर्ड किसके पास आता है, मेडिकल कोडिंग कंपनी के पास में आता है, और वहां पे जो मेडिकल कोडर होते हैं वो उस मेडिकल रिकॉर्ड को कन्वर्ट करने करते हैं पर्टिकुलर कोड में। ओके, एंड दैट आफ्टर कन्वर्टिंग टू द पर्टिकुलर कोड, दैट रिकॉर्ड विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, प्रॉपर कोडिंग है या नहीं है देख के उसका पेमेंट रिइंबर्स करेगा, किसका, प्रोवाइडर का। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है, प्रॉपर कोडिंग हुई है या नहीं है ये चेक करने का। तो आजकल, पहले क्या होता था, सिर्फ प्रोवाइडर एंड कोडिंग होती थी, अब कोडिंग पेयर एंड से भी होती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। ओके, प्रीवियसली मैं डॉक्टर के लिए काम करती थी, नाउ आई एम वर्किंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। So you know how to deny the code, what is the error in the code, what is extra code they build. So all the things you need to be check here. So you want to be a perfect in medical coding. So as per your performance, you will get the
opportunity to move towards the QA or quality analyst. Okay. Please give the next. Guys, if you have any question, ask me. Okay. Please don't listen only. Please click on slide only. Click on slide. Okay. Can click. Yeah. See, if a physician फिजिशियन अपने ओपीडी में बैठता है 8 to 5, ओके, और उस टाइम पे वो 20 पेशेंट्स देख रहा है और अप्रोक्सीमेटली उसके पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं पर मंथ? 500 पेशेंट्स आ रहे हैं और वो एक पेशेंट से कितना चार्ज कर रहा है? $200 चार्ज कर रहा है. इट मीन 500 into 200 कितना होता है? अराउंड $10 उसका रिइंबर्समेंट होना चाहिए किससे? इंश्योरेंस कंपनी से. So this will be paid by the insurance, not by the patient. Patient पे नहीं करेगा, insurance company पे करेगा any service he is getting from the provider. Okay. Please click on slide ma'am. Once again. See, medical record goes to insurance company and medical coder convert it into a particular code. Okay. Told you, if a doctor is giving the patient like fever he is having, hypertension he is having, so there are 3 types of coding. Okay. First one is diagnostic coding with diagnostic code. It means ICD-10. ICD-10 is nothing but the that is a disease code. Okay. If the patient having hypertension, so the hypertension code will be a I-10. Okay. If procedure coding is performed, then procedure coding with procedure code. There are number of numerical and alphanumeric codes. So we need to use this CPT code. Okay. For particular medical record, we need to use CPT codes and ICD codes also. Okay. And next one is HEPTIC code. HEPTIC code is nothing but the medical durable equipment. I told you, if wheelchair is provided, he is using wheelchair, he is giving wheelchair, then there is particular HEPTIC code for that. Okay, so this type of coding we need to do for particular medical record. Okay, there are different specialities also in medical coding. You will be your surgery coder, you will be a E&M coder, like normal office visit. Okay. Next, see what is international, what is ICD? ICD is nothing but the international classification of disease. Okay, and here see in the box ICD-10 having 14,000 codes and ICD-10-CM having 18,000 plus codes. Okay. What is CM? CM is a clinical modification. Okay. International classification of disease includes signs, symptoms, abnormal findings, complaints, and social circumstances. There are 68 plus thousand codes in the ICD-10-CM. CM is a clinical modification. Previously, there are only 14,000 codes. But when World Health Organization keep this updating on the CM, after that there will be a 68,000 codes. Previously, there is no code for coronavirus. Okay. After this disease happened, now there is no U series code previously. But for corona, there is a U series code included now. Okay. Next. Next again. See, this is a structure of ICD-10 code. The alphanumeric code, that is C52.11. All the code description you will found in a Google ICD10data.com or you will be find in the books. Next slide. Again, next. I told you for hypertension there is I-10. Code is for I-10 is for hypertension. Next. Okay.
Okay. Next, ICD is a set of medical diagnostic code. Okay, that is maintained by World Health Organization. Who maintained the world ICD? So you can know is a WHO. So the World Health Organization maintained the ICD, and it creates a universal language for reporting disease and the injuries. See here, there are particular series for particular chapters. Like A to B series is for infectious and parasitic diseases. So always, if you are having a parasitic diseases, always your code is start with the A to B series. If you are having neoplasm or cancer, always start with the D and the C series. So for particular systems of the body, there are particular series like A series, B series, D to Z series. See here, you are not getting a U series because previously U series is not there. Now we are having U series also. There is ICD-10, which is only numeric code, and ICD-10 is a more appropriate because it is alphanumeric, and as per the laterality we can give numbers also and the alphanumeric codes also. So that there is a difference between ICD-9 and ICD-10. So we are using ICD-10 now. We are not using ICD-9. See, this is the format of ICD. Okay, there are 3 to 7 character in the ICD. This first 3 character is a category code. Okay, so if code will be a minimum 3 character or maximum to 7 characters. Okay, so this 3 character is a category, and after full stop there is a subcategory. Okay, for it to complete a code there are 7 characters. If 7 character is given in your book, you need to apply 7 character. Okay, see here, category, after full stop, first digit is the etiology. Etiology means what is the reason behind. Okay, etiology. Then second is the location. It means if you are having right hand fracture, so fracture is there, but what fracture you are having? In the radius you are having, or you are having in the ulna, or you are having in the humerus. Okay, so you need to check the location. Shaft of the humerus is fractured, or what is fractured. Then laterality. Laterality is nothing but the right, left, or both, bilateral. That showing is a 6 character. That is for laterality. Okay, 1 is for right arm, 2 is for left arm, 3 is for bilateral. Okay, and 4 is for unspecified. And A is the extension. Extension is nothing but to give a 7 character, we need to apply a alphanumeric code there. That is A, B, D, K, S, anything. Okay, so this is a structure of coding, ICD coding. Okay, so 3 to 7 characters we need it. Next, what is ICD-10 CM? Concept. Concept is, first is type, we need to check. Then next is severity, episode, temporal factor, findings, manifestations. There is a cause, like what is the exact ICD you need to check for. Like, okay, here manifestations are like I told you, the fracture you are having in the right hand. So exactly where is the fracture? In the shaft of the fracture, in the shaft of the humerus, or the end of the humerus. So associated conditions also there. Okay, so that all ICD-10 concept you need to be clarified before searching for the code. Okay, CPT refers to a set of medical codes used by physician, health professional, non-physician practitioner, hospital, outpatient facility, and laboratories. So for everything, laboratory services, radiology services, physician using all the code, that is a current procedure terminology code, that is CPT. There are 3 types of category in this CPT. Okay, first one is category 1, second is category 2, and category 3. Category 1 is the largest and most commonly used. So that describes the medical procedure and technologies and the services. And category 2 used for the performance management and additional data. Any additional services if physician is providing to the patient. So we are using category 2 codes, and category 3 codes is nothing but the HIPIC code. I told you, if provider is giving some wheelchair or something, so
In that case, we are using category 3 codes. Okay. This is a CPT coding list. For particular chapter, we are having particular series. For anesthesia, starting with the 0 series. Surgery code starting with the 1 to 6 series. 1 series is for integumentary, 2 for musculoskeletal system, okay, 3 for heart, 4 for gastro, 5 for urinary system, and 6 for neurology. Okay, next is radiology procedure is for always comes with the 7 series. Pathology is 8 series, medicine 90 series, ENM 99 series. Okay, this is the category 2 code, always ends with the F. Okay, always ends with the F. And here category 3 code ends with the T code. T codes are category 3 codes. Okay, next. HIPIC is the Healthcare Common Procedure Coding System. Is a standardized coding system. This is the main procedural code set for reporting procedure to Medicare, Medicaid, and large number of the other third-party payers. Medicare is a state. There is state government insurance. Okay, Medicaid is a private insurance, and third-party payers means other insurance. Okay. Like in our India, having LIC. LIC is a government insurance, and private insurance are like some other, like Bajaj, and some things are there. So same things will be in the US. So level 1 is a CPT, and level 2 is a HIPIC code. Okay, when medical coder talk about HIPIC codes, it means they are referring to HIPIC 2 level codes, and they are talking about CPT, it means HIPIC level 1 code. Okay, see what is the application of medical coding. So statistical analysis of disease and therapeutic disease. We need to analyze what is the disease, what is therapeutic disease, and first of all, why we are doing medical coding? For reimbursement purpose. Okay, we are generating a revenue for the doctor. So we need to have a particular basic knowledge of the things, exact knowledge of the things. Okay, surveillance of epidemic and pandemic outbreaks, evolution process and outcome in the healthcare, internal and external quality management. These all are the medical coding applications in the medical coding company. Get started. Okay, how to get started your career? First, what is the type of coding you want to do? Like you want to do a provider side coding or you want to do a payer side coding. Next, first you need to be a member of APC. What you should do for this? You need to do a certification like CPC, CCS. So you will be a member of APC community. Complete anatomy and medical terminology courses. Like anatomy means you need to study all the systems of the body. Okay, and complete comprehensive coding course. Okay, from your instructor. Successfully, you need to pass a coding certification exam. Next, you need to do externship in the real world experience, means you need to work in the particular coding company. So after that, you only get the knowledge how it works, and you need to post your resume and review the job openings. Yeah, see what is attributes of an exceptional coder. It first you have to be educated. You will be a researcher. It is not like that you will get a job. Now I'm not going to study. But in this field, daily you will get a new queries. Okay, so that you will be a critical thinker. You have to research by yourself. What is exact a particular procedure doctor is doing, where is doing. So all for that you need exact knowledge of anatomy, physiology. You have a detail oriented knowledge, and you will be a confident on your things. After this, all are the attributes of the exceptional coder. And as you work, you are giving a 98% quality on your project, you will be directly promoted to a next level. You will be a quality auditor or like that. This is the certification option. You will be getting this type of certificate after completion from the APC. See, these are the certifications. What is popular? First is the CPC. Next is COC, is a certified outpatient coder. CIC is an inpatient coder. CRC is a risk adjustment coder.
CDEO is a certified documentation expert outpatient, and CDEI is a certified documentation expert inpatient. But most commonly we are doing is CPC. CPC is the best for everything. It is the basic steps in coding involved are, first we need to review the health record. Okay. After reviewing health record, what we'll do? Identify the diagnosis and the procedure to be coded. After that, what is principal diagnosis? What exactly the patient is coming to the doctor? Okay. If मैं अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों गई हूँ? ओके, फर्स्ट मुझे अगर फ्रैक्चर हुआ है राइट हैंड में, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द प्रिंसिपल डायग्नोसिस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग पेन. तो पेन क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ. बट मेरा पर्टिकुलर रीजन क्या है डॉक्टर के पास जाने का? फ्रैक्चर. तो फ्रैक्चर क्या हुआ? मेरा प्रिंसिपल डायग्नोसिस, एंड आफ्टर दैट पेन, secondary diagnosis. Okay. Identify the main terms in the alphabetic index. There are two index in the ICD coding. Okay. First is alphabetic index and second one is tabular index. As like dictionary, we are using dictionary in normal cases, na? Like that, you only use these alphabetic index and tabular index for searching a code. Follow a cross-reference instruction. There are some instruction below the codes like C also or C. So you need to follow the instruction below the code. Verify the tabular list code selected from the index and refer to any instructional notation in the tabular. Assign codes in the highest level of the specificity and assign code to the diagnosis and procedure, and reporting all applicable codes and sequences in the coordination with the guidelines. You will be always following a guideline, okay, before assigning a particular code. So these are the basic steps in coding. Next slide. Here are some questions. Now I am going to ask you. Okay, you need to answer these questions now. So, which are the coding types in healthcare industry? I have explained everything now. You can answer this question. You can unmute yourself. All the above. Ma'am, please click on screen once. Yeah, you are correct. Next one, next slide. CD 10 cm coding format consists of 7 characters. 7 characters. 7 characters. Okay, ma'am, click on screen. Yeah, correct. Next slide. APC is a American Academy of Professional Coders. True or false? True. Yeah, okay, correct. Next slide. Do you have any question, guys, now? मैं why we need this medical coding, मतलब इसका क्यों मतलब जरूरी कि उसको रिकॉर्ड को तो हम वैसे भी सेव कर सकते हैं ना, डॉक्टर लैंग्वेज में जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको भी सेव कर सकते हैं वैसे डेटा को, तो कोड में ही क्यों करते हैं? ओके, सी यहाँ पर अभी जो स्क्रीन चालू हुई है उस पर देखो. इंश्योरेंस कंपनीज एंड द गवर्नमेंट आर स्पेंडिंग मोर टाइम एंड मनी रिसर्चिंग फॉर वेज टू कंट्रोल क्लेम्स, फ्रॉड, अब्यूज एंड मेडिकल नेसेसिटी इश्यूज. ओके, तो अगर हम लोग डेटा को एक पर्टिकुलर कोड में प्रॉपर हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं तो प्रोवाइडर क्या करेगा? फ्रॉड कर सकता है. जो सर्विस उसने प्रोवाइड किया भी नहीं उसको भी वो बिल करके इंश्योरेंस से पैसा ले सकता है. So, for avoiding that fraud and abuse cases, okay, and medical necessity issue, if अगर तुमको फ्रैक्चर हुआ है राइट हैंड में और उससे लेफ्ट हैंड शो कर रहा है, तो दैट इज मेडिकल नेसेसिटी इशू. ओके, मेडिकल नेसेसिटी इज बट द करेक्ट आईसीडी. ओके, तो अगर हम आईसीडी प्रॉपर नहीं देंगे और कुछ डिफरेंट प्रोसीजर कोड कर देंगे तो वो चीजें फ्रॉड में आती है. एक्स्ट्रा इंश्योरेंस से पेमेंट लेना, ये क्या हुआ है? फ्रॉड. तो उसको स्टॉप करने के लिए हमको मेडिकल रिकॉर्ड को कोड में कन्वर्ट करना जरूरी है. नाउ यू अंडरस्टैंड. वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल कोडिंग इज अ बिलिंग स्पेशलिस्ट, patient account representative. What is the billing specialist? First, medical coder convert a medical record into a particular code, and after converting to code, billing specialist will enter these into a particular software
and then account representative take the money from the insurance company. Okay, then electronic claim processor, these are the again some opportunities to be a coder. Billing coordinator, coding specialist, claim analyst, reimbursement analyst, medical collector, claim processor, claim reviewer, and private consultant. These all are various career opportunities for medical coding. Good afternoon, ma'am. I am Rishabh. Yes, hi. Hello. Hi, good afternoon. Currently I am pursuing the pharma degree and I am in fourth sem right now. Hmm. I just want to ask, suppose if I want to pursue medical coding, what is the Hmm. minimum qualification I will be required for the same? Minimum qualification is bachelor's. Okay, if someone having D-Pharm diploma like that, or your bachelor in pharmacy, na, so you can pursue this course now. So after completing your degree, you can apply directly to the job. But is it possible to pursue it in online mode? Yes, you can do online course. What is the salary in medical? एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी रहेगी अराउंड 15 to 20,000. आफ्टर 1 year और 6 month इट विल बी 22 or 25. एज जैसे जैसे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका अगर प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी इंक्रीज होती है. विद इन 5 years यू विल बी गेटिंग लाइक 50 or 60,000. ओके, even some people within 3 years they are switching the companies and getting 50,000. तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क कर रहे हैं, कैसे क्वालिटी पे आप कंपनी को प्रोडक्शन दे रहे हैं. ऑल डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट. ओके मैम, मेरा नाम मयंक है. हेलो. यस. मैं बी फार्म ग्रेजुएट हूँ और अभी जॉब कर रहा हूँ. बट मैं मेडिकल कोडिंग के बारे में कई दिन से पढ़ रहा और जान रहा था. मुझे मैम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना है कि इस फील्ड में क्या एक जो ट्रेंड पर्सन है उनके हेल्प के थ्रू क्या इस फील्ड में बिजनेस किया जा सकता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास में ट्रेंड पर्सन है जो आपकी कंपनी को प्रॉपरली चला सकते हैं या प्रोवाइडर को प्रॉपर वर्क करके दे सकते हैं, तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैम मैंने क्योंकि कई सारे ये मैंने बात की थी कई इंस्टीट्यूट से. उन्होंने ये कहा था कि जो अमेरिका का कोई एग्जाम होता है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको वो लाइसेंस मिलता है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते. तो क्या ये जो आपने अभी कोर्स डिजाइन किया है इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? आपको सबसे पहले अगर मेडिकल कोडिंग की कंपनी ओपन करना है तो आपको एज अ मेडिकल कोडर उस पर वर्क करना पड़ेगा. आपको वो प्रोसेस को पूरे तरीके से समझना पड़ेगा, लाइक दैट. ओके, मैंने अभी बताया कि सीपीसी सर्टिफिकेशन है, तो आपको वो सीपीसी सर्टिफिकेशन पहले करना पड़ेगा, तभी आप चीजों को प्रॉपरली समझ पाएंगे. वही वाला एग्जाम है जो एग्जाम अमेरिका अपने मतलब कोडर के लिए करवाता है, जिसकी फी जो फॉर्म फीस 53,000 समथिंग है और 3 बार ही इसका एग्जाम देना पड़ता है, मतलब दे सकते हैं. ये वही एग्जाम है क्या? एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया एपीसी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल कोडर, राइट. तो वो सीपीसी एग्जाम होता है. आपका फीस है अराउंड 53,000. अभी आई थिंक कुछ बड़ा है. ओके, तो उससे आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं. ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं करते तो आपके पास सेकंड अटेम्प्ट भी होता है. आवाज कट रही है आपकी मैम. ओके, अभी आ रही है? यस मैम. हाँ, तो आपके पास 2 अटेम्प्ट होते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर नहीं किया तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलता है विद इन 15 days. आपको वो रीअटेम्प्ट करना होता है. ओके, और अगर वो भी क्लियर नहीं हो सकता तो फिर आप कोडर नहीं बन सकते. नहीं, और अगर कोडर नहीं बन फीस भर सकते हो, आप वापस उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट आपको फिर से फीस भरना पड़ेगा.
नहीं, मेरा बस इतना सा क्वेरी था मैम कि अगर मैं वो सर्टिफिकेट, क्या आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो ये वाला, इसके थ्रू क्या वो सर्टिफिकेट मुझे डायरेक्ट मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, या एक्चुअली फिर ये, वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर मैं एक प्रोफेशनल कोडर बन सकता हूँ? हाँ, आपको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेशन एएपीसी के तरफ से आएगा। आप उसके बाद ही आप ओके, एक प्रोफेशनल कोडर बनोगे। ओके, थैंक यू मैम। Now, anyone having doubts? Any questions? मैम इस कोर्स की फीस कितनी है मैम? कौन से? ड्यूरेशन एंड फीस, बेसिक ये मेडिकल मेडिकल कोडिंग। इट्स अराउंड मैम 7। आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस मैम। या अराउंड 7 to 8,000 फीस आई थिंक बेसिक मेडिकल कोडिंग की होती है और जनरली। एडवांस मेडिकल कोडिंग भी है आपके पास? इफ अगर आप सीपीसी करते हो लाइक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तो उसका फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, जो अभी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, बट हम्म। इफ आप इंटरेस्टेड हो तो आई विल टेल यू। ओके, और इसका ड्यूरेशन क्या वही सैटरडे संडे ही रहेगा जो रेगुलर कोर्स के रहते हैं? हाँ, ये जो आपका कोर्स है बेसिक मेडिकल कोडिंग का, ये 3 मंथ्स का कोर्स रहेगा एंड सैटरडे संडे आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी। इट मीन्स पर वीक आपकी 4 आवर्स की क्लास होगी। थैंक यू या मैम। या वेलकम। मैम हाँ, यस। मैम मैं अभी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सीपीसी करने में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब मुझे करियर कोडिंग में ही करना है। तो उसके लिए सब लोग बोलते हैं कि मतलब कोर्स वाले की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर एग्जाम भी है। तो ट्रेनिंग में फीस अलग होती है और एग्जाम की फीस अलग होती है, ऐसा कुछ है क्या उसमें? मतलब फीस हाँ, स्ट्रक्चर। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग की फीस अलग होगी एंड एग्जाम जो आप फीस भरते हैं वो डायरेक्ट एपीसी को जाता है, तो वो फीस अलग होता है। ओके, वो समथिंग लाइक $250 इन डॉलर्स में वो फीस होता है, तो इन इंडियन करेंसी दैट विल बी 53,000 वगैरह कुछ आता है उसका चार्जेस। मैम वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे देंगी क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स समझी नहीं मैं। सीपीसी उनका जो क्लासेस। मतलब कि एग्जाम का वो कंडक्ट करने का जो मेथड होता है, मैनर होता है, वो सब कुछ आप क्लियर कर देगी क्या एग्जाम का? हाँ हाँ, मैं वो क्लियर कर सकती हूँ। लाइक कैसे एग्जाम होती है, 4 आवर्स एग्जाम चलती यस है, यस मैम। लाइक वही। दैट कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। अच्छा। ओ, फाइनल ईयर में, आई मीन बीएससी फाइनल ईयर में है और क्या? नहीं मैम, बी फार्मेसी फाइनल ईयर। ओके ओके फाइन। बी फार्म के लिए तो बहुत ही बेटर है कि आप मेडिकल कोडिंग में अपना करियर चूज करो। हाँ जी मैम, बट यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा नॉलेज तो देता नहीं है, तो थोड़ी रुकी हूँ, नहीं तो मैं कर लेती अभी। ओके ओके, बात तो एक्स्ट्रा नॉलेज की भी है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि सीपीसी इतना इजी कोर्स नहीं है कि मैंने बोल हाँ दिया जी मैम। हो गया। हाँ, तो उसके लिए हाँ बहुत जी हाँ एफर्ट्स जी। आपको डालने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये जो सीटीसी एग्जाम है, और ये ओपन बुक टाइप एग्जाम होता है ना कि आप वहां पर आपको बुक दे दिया जाएगा और क्वेश्चन के वो पॉइंट जो पेज नंबर और उसके जो पॉइंट्स होते हैं उसके ABCD उसके अकॉर्डिंग वहां पे आंसर करना होता है? ये एक ओपन बुक एग्जाम होती है। ओके, आपको बुक्स पूरी दे देंगे उन लोग, आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, हम्म। आपको बुक्स हम्म। क्वेश्चन आंसर देना है, हम्म। बुक में सर्च करना है और आंसर आपको सर्च करके वहां पे ऑप्शन में से चूज करना है। तो ये ओपन बुक एग्जाम है, तो उसमें आपको ये इतना टेंशन। कंप्लीट
कंप्लीट मैम, इसके जो एडवांस एग्जाम होते हैं इसके, क्योंकि दो एग्जाम होते हैं, एक तो प्री एग्जाम होते हैं, एक एडवांस एग्जाम होते हैं, तो प्री में भी ओपन और एडवांस में भी ओपन होते हैं? प्री और एडवांस ऐसा तो कुछ नहीं होता है, एक सिंगल ही एग्जाम होता है सीपीसी का, उसमें ओपन बुक एग्जाम होता है वो। पहले उसमें और 150 क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ 100 क्वेश्चन ही आते हैं। और ये जो सारे जो बुक आप जो, अगर मैं आपकी कोर्स लूंगा तो आप ये सारे जो बुक है ये सारे आप मुझे अवेलेबल करवाओगे फिजिकल फॉर्म में? अगर आप सीपीसी के लिए एनरोल कराते हो, सीपीसी सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको सारी बुक्स अवेलेबल करा के दी जाएगी। अगर आप बेसिक मेडिकल कोडिंग में कराते हो तो आपका सिर्फ बेसिक नॉलेज अबाउट मेडिकल कोडिंग, ताकि आप एक इंटरव्यू क्रैक कर सको एज अ फ्रेशर, उतना हम आपको प्रिपेयर करवा के देंगे। ओके, सीपीसी अगर आप करवाते हो तो आपको सारे बुक्स अवेलेबल होंगे। बट मैम यहाँ मैं जयपुर से हूँ मैम, और मैंने मेरे फ्रेंड ने कई सारे अभी मेडिकल कोडिंग में जॉब कर रहे हैं, और उनसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो तो बेसिक्स एनाटॉमी पूछे गए थे, थोड़े फार्माकोलॉजी वगैरह पूछे गए थे, थोड़े डायग्नोस्टिक्स में थोड़े से पूछे गए थे, और थोड़ा सा जो क्लिनिकल एक्टिविटी जो होते उससे पूछे गए थे, उसके बाद उन्हें जॉब दे दिया गया था। तो फिर मैं बेसिक्स में आप ये मतलब मेडिकल कोड, और उन्हें सॉफ्टवेयर दिया गया है उनके लैपटॉप पे, उनके कंप्यूटर पे, और वो सिर्फ इनिशियल देते हैं जैसे अपन एक्सेल में काम करते हैं, सिर्फ वैसे ही उनमें मतलब काम करना होता है। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट हो जाता है। जब एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो आपको बुक के थ्रू काम करना पड़ रहा है, आप जॉब कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना पड़ता है। ओके, देखो, अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो बेसिक मेडिकल कोडिंग में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, तो आप इंटरव्यू कर सकते हो। ओके, तो अगर आप सीपीसी के थ्रू जाते हो, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपका सैलरी पैकेज कितना बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका नॉलेज उतना बढ़ जाता है चीजों को लेके, एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है। ओके, तो एग्जाम मेरे तो फ्रेंड आपकी को, हाँ हाँ राइट, बट मैम आवाज बहुत कट रहा है मैम, आवाज क्लियर नहीं है मैम। एक मिनट, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा अभी। हाँ मैम अब सही है। ओके, तो सॉफ्टवेयर वो क्यों देते हैं, सॉफ्टवेयर में उनके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स इनबिल्ट होते हैं, डेली उनके पास वो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड्स आते हैं, और आपको वो रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना है। तो वो कैसे आपको भेजेंगे, प्रोवाइडर आपको कैसे रिकॉर्ड भेजेगा, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजता है। लेकिन आप जो बुक की बात कर रहे हो, उन लोग के पास में सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारे मेडिकल कोड्स होते हैं, जैसे एज इट इज बुक होता है, बट वो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपको वो सॉफ्टवेयर में ही आपको सीपीटी सर्च करनी होती है। ओके, आप बुक यूज नहीं कर सकते फ्लोर पे, आप यूज भी कर सकते हो, समटाइम्स आपको बुक भी यूज करनी होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सॉफ्टवेयर ही यूज करना होता है। तो सारी इनबिल्ट बुक होती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां से आपको कोड सर्च करने होते हैं। तो मैम एज अ बी फार्म ग्रेजुएट मुझे किस तरफ ज्यादा फोकस, मुझे ये जॉब की तरफ फोकस करना चाहिए या सीपी जो एग्जाम एक प्रोफेशनल कोडर बनना चाहिए? ये मतलब क्योंकि मेरा माइंडसेट बिजनेस के लिए, जॉब के लिए नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग में हर समय चलता है कि यार एक बार जॉब कर लेते हैं, वहां से सीख लेंगे, मतलब प्रोसेस को सीख लेंगे, तो फिर उसके बाद अगर मैं कुछ बिजनेस करूंगा तो फिर मुझे एग्जीक्यूट करने में ज्यादा इजी होगा। तो मेरे लिए क्या बेटर होगा, आप कुछ गाइड कर सकते हो? देखो, अगर आप एज अ फ्रेशर भी जाते हो किसी कंपनी में, तो कंपनी खुद भी ऑर्गेनाइज करवाती है सीपीसी सर्टिफिकेशन, तो आप कंपनी के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप करके जाना चाहते हो बाहर से, तो वो तो और भी अच्छी बात है, आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा, आपको नॉलेज उतना रहेगा चीजों को लेके, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कंपनी के थ्रू करना है तो आप वो भी कर सकते हो। पहले बिजनेस करने से पहले आपको उस बिजनेस को समझना पड़ेगा, तभी आप अपना एक फॉर्म खड़ा कर सकते हो।
डायरेक्टली मैम अगर मैं एक हाँ सेकेंड क्वेश्चन ये कि क्या आपकी ट्रेनिंग करने के बाद फ्रीलांस जॉब इसमें मिल सकती है? देखो, फ्रीलांसिंग का तो मैं नहीं बता सकती हूँ, बट आपको रेफरेंस मिल सकते हैं कि कहाँ पर वैकेंसी चल रही है, आप वहां जाके इंटरव्यू देके आप अपनी जॉब ले सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के बारे में फिलहाल मुझे उतना आइडिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ ओके है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी अगले क्लास या अगले सेशन में। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, यस। हाउ मच सैलरी फॉर सीपीसी सर्टिफाइड कोडर? क्या आवाज क्लियर नहीं है? एक्सक्यूज मी मैम, हम बोल रहे हैं सीपीसी करने के बाद एक सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपका अगर फ्रेशर सीपीसी करने के बाद, यू मीन सीपीसी सर्टिफिकेशन के बाद, ओके, आपको डायरेक्टली 22 से 25,000 मिल सकता है। मैम ये तो कंपलसरी नहीं है कि जॉब पाने के करना पड़ेगा, मतलब जॉब पाने के बाद भी तो कर सकते हैं सीपीसी? हाँ हाँ, आप एज अ फ्रेशर भी कंपनी में जा सकते हो, जॉब करने के बाद भी सीपीसी कर सकते तो ये जो कंडक्ट करता है एपीसी, तो उसका फीस कितना होता है? हो। इस अराउंड 53,000 है मेरे ख्याल से। तो आप ऐसा है कि कंपनी के थ्रू करते हो तो कंपनी आपसे 2 साल का बॉन्ड साइन करवाती है, और आप कंपनी के पैसों से भी सीपीसी कर सकते हो। कम कंपनीज ऐसी है जो सीपीसी सर्टिफिकेशन करवाती है। सो मैम यहाँ पर क्या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है? मतलब जैसे आईटी जॉब में होता है वर्क फ्रॉम होम, तो 1-2 साल में मैं वर्क फ्रॉम कर सकता हूँ यहाँ पर मेडिकल कोडिंग पे? देखो, अभी फिलहाल तो बहुत सी कंपनी है जो बैक टू ऑफिस उन्होंने चालू कर दिया है, फिर भी कुछ कंपनीज वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रही है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करे या वर्क फ्रॉम ऑफिस है। अच्छा मैम, मेडिकल कोडिंग आती है फ्रेशर ज्वाइन हो, उसके बाद 2-3 साल बाद तो उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, मतलब जब हम अपग्रेड होंगे मेडिकल देखो, कोडिंग के बाद? डेजिग्नेशन ये है, सबसे पहले हम एज अ फ्रेशर आई मीन ट्रेनी ज्वाइन होते हैं, ट्रेनिंग के बाद हम एग्जीक्यूटिव बनते हैं, एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं। आफ्टर दैट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप क्वालिटी अच्छा दे रहे हो, तो आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो, सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हो, टीम लीडर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। तो डिपेंड ऑन आपकी कैपेबिलिटी, वो डिपेंड करता है, और ईयर बाय ईयर आपका डेजिग्नेशन बढ़ता ही है। नहीं, एज सच कोई मेडिकल कंपनी है ये सॉरी? मेडिकल कोडिंग रिलेटेड, एज सच कोई कंपनी का नाम आपको पता है? मतलब मुझे पता नहीं है इतना। ओके, बहुत सी कंपनी। मैम, कैन यू प्लीज गिव अ नेक्स्ट स्लाइड? कंपनीज के नाम है दिए हुए वहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, अगेन नेक्स्ट। या सी, ये देखो कंपनीज के नाम है यहाँ पर। ओमेगा हेल्थ केयर है, गैप्स है मुंबई में है, एक्सेंचर, विप्रो पुणे हैदराबाद, किम्स हॉस्पिटल दे रहा है मेडिकल कोडिंग, कॉग्निजेंट है। बहुत सी कंपनीज है जो मेडिकल कोडिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी दे रही है। एक्सेस हेल्थ केयर है, पुणे की सबसे बड़ी कंपनी अभी फिलहाल वो। तो बहुत से अपॉर्चुनिटीज है सो आपके मैम, पास। तो इंटरव्यू का राउंड कितना होता है यहाँ पर, मतलब मेडिकल कोडिंग पे? देखो, जब हमने इंटरव्यू दिया था तो 3 राउंड हुए थे। फर्स्ट एक एग्जाम होती है, नॉर्मल मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक एग्जाम होती है। नेक्स्ट होता है इंटरव्यू, एंड थर्ड इज एचआर राउंड। 3 होते हैं। मैम ये सेम है अभी भी? थिंक तो सेम ही है, बिकॉज एक एग्जाम तो कंपलसरी है। अब शायद वो एग्जाम स्किप हो गई होगी तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, बहुत सी कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। ओके ओके, थैंक यू। हम्म। हेलो हेलो। हाँ, यस यस। मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था, जो सीडीएम और पीवी और मेडिकल कोडिंग में किस में ज्यादा स्कोप होता है? क्या क्या सीडीएम सीवी और सीडीएम, पीवी और मेडिकल कोडिंग किस में ज्यादा स्कोप होता है? अब देखो, स्कोप का ऐसा है कि हम जिस फील्ड पे जाते हैं वहां हमको स्कोप मिलता जाता है। ओके, अगर आप पीवी में भी जाते हो तो पीवी में भी अच्छी अच्छी कंपनीज है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है। तो
वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स में जाते हो। आप इंटरेस्टिंगली अगर वर्क करोगे तो आपको मेडिकल कोडिंग में भी अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी। आप 1 साल के बाद स्विच कर सकते हो, सेम एज अ फार्माकोविजिलेंस। ओके, तो वो अच्छा, डिपेंड करता है। मेडिकल कोडिंग में एक 1 ईयर तक किया तो मैं फिर चेंज भी कर सकती हूँ ना, पीवी सीडियम वगैरह वैसे। हाँ हाँ, आप डायरेक्टली देखिए 1 साल का अगर एक्सपीरियंस आपको आता है, आप कंपनी स्विच करेंगे, आपको डायरेक्टली 30 to 40% हाइक मिलेगा। ओके, तो आप हाइक देखोगे या अपना ये स्पेशलिटी चेंज करने का सोचोगे? आप सोचोगे कि मेरे को हाइक क्या मिल रहा है, मैं वो करती हूँ। तो ओके। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा। हम्म। तो वो हेलो डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड चूज करते हो। मैम, पीबी में मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। आज से 2-3 साल बाद पीबी में कोई जॉब एज सच नहीं रहेगा। मतलब पीबी में बहुत ज्यादा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, पर ऐसा मेडिकल कोडिंग भी नहीं होगा। ऐसा तो कुछ मैंने सुना नहीं है मेडिकल कोडिंग में, बिकॉज तो अभी तो और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है मेडिकल कोडिंग में, बिकॉज अभी पेयर एंड से भी काम चालू हो रहा है। तो वही प्रोवाइडर एंड तो ठीक है, पेयर एंड से भी हो रहा है, इट मीन्स और आपके लिए वैकेंसीज वहाँ पे क्रिएट होंगी, बंद होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैम, पीबी में आज से 2-3 साल पहले बहुत था, पर अभी पीबी में ऐसा इतना वैकेंसी। ओके, सो आप अपनी फील्ड चूज कर लो, फिर मेडिकल कोडिंग चूज कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा करियर उसमें नहीं है आगे चल के, तो आप मेडिकल कोडिंग में अपना करियर देख लो। और ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है, मैंने खुद यहाँ पर एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था और अभी मैं एज अ क्वालिटी एनालिस्ट वर्क कर रही हूँ। अपॉर्चुनिटीज इन सब कुछ आपके हाथ में होता है। ओके, आप कैसे काम करते हो, आप कितना प्रोडक्टिव हो, आप कितना अपने आप को प्रूव करते हो, क्या क्वालिटी दे रहे हो, ऑल डिपेंड्स ऑन योर हैंड। Anything else? Do you have any questions, anyone? हेलो मैम। हेलो। Yes, yes. हाँ मैम, मैं 1-2 साल मेडिकल कोडिंग में काम करने के बाद क्लिनिकल सर्च प्रोग्रामिंग में स्विच करना चाहता हूँ। तो हम जो 1-2 साल मेडिकल कोडिंग में काम करेगा तो उसका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या क्लिनिकल सर्च में? क्लिनिकल सैस में जो कोडिंग होता है, इट इज रिलेटेड टू द डेटा मैनेजमेंट में जो कोडिंग होता है, दिस इज मेड्रा कोडिंग एंड दिस इज कनेक्टेड विद द डेटा मैनेजमेंट। एंड वो कोडिंग में अगर होता है तो योर एक्सपीरियंस शुड बी काउंटेड, बट इफ यू आर वर्किंग इन सीपीसी एंड आईसीडी कोडिंग, दिस इज डिफरेंट, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, क्योंकि क्लिनिकल सैस में वो कोडिंग यूज ही नहीं होता है। वहाँ पे आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा पे काम करना होता है। So you should be aware about this. आप वो नहीं कर सकते. You should be treated as a fresher there. सर, आपने जो कोडिंग बोला वो क्या बोला जो काउंट होगा? मेड्रा कोडिंग. It is a part of PV. Pharmacovigilance में भी वो यूज होता है and डेटा मैनेजमेंट में भी वो यूज होता है. It is a मेड्रा कोडिंग. MED-DRA. ओके इसके अलग अलग वर्जन भी आते हैं अपडेटेड. 6 मंथ में वो अपडेट होता है, हर 6 मंथ में. So you have to update accordingly. Yes. Yeah, we can continue. Then also questions हम randomly ले लेंगे in between. Yeah, Sonal. Yeah, okay. There are some opportunities in India. So this company are providing medical coding jobs like Gaps Healthcare, Accenture, Wipro, United Healthcare, Bajaj Alliance is also there, Cognizant, Kim's Hospital, and Omega Healthcare. So apart from this, there are many more companies are there. Okay, so don't worry about after completion of course I will be getting a job or not. Definitely you will get a job. Okay, but you have to do a course on your own, own efforts, and you need to learn everything. It is a very big, big area of knowledge. So you can't learn in one day everything. You need to spend your time in this field for around 2-3 years. After that, you will be getting a
total knowledge of this field. Okay. After some are the interview questions are there also given. Ma'am, please give back slide. This one, so like such type of questions they will ask in the interview. These are the basic questions. Okay, so then you are going to learn. I will tell you what is the anatomy, the types of circulation. So circulation types are two. Okay, first is the pulmonary and the systemic circulation. What are the books of coding? So CPT book, ICD book, and the third one is a HIPTIC book. Three books are there. Explain about system anatomy. They will ask you such questions. What are the parts of the small intestine? We are taking the exam. They will ask such type of questions only. Very short question and very easy question they are asking. But you need to know the anatomy of particular system and the medical terminologies. So you can easily crack the interview. Okay. Next. See, these are the medical coding job. Medical coder, ICD-10 coder, inpatient coder, particular specialty coder. As I said, I have knowledge of inpatient coder. So that is a specialty. Inpatient, outpatient, IVR, these all are specialty. So you will be a specialty coder also. Coding consultant, outpatient, provider practice coding consultant, coding supervisor, coding specialist, coding manager, educator. These all are the career opportunities you will be having. Next. Thank you guys. Completed my presentation for today. We'll do one presentation, okay? So keep attention for this. Yes, Snehal, can you start? And then after Yes, remaining sir. questions, we'll cover. Yeah. Yes. Yes, my screen is visible with everyone. Yes, ma'am. Yes. Okay. So webinar on medical coding, and this webinar is organized by the Global Pharma Academy Pune. So moving to the next. Global Pharma Academy Pune. We are Global Pharma Academy, which is the ISO and MSME certified national level institute in pharmaceutical and healthcare sciences, established with a proclaimed objective of becoming a center of excellence to guide students for building their career in the pharma sector. We offer certification programs like pharmacovigilance, advanced SAS, medical coding, clinical research, medical writing, drug regulatory affairs, retail pharmacy business management, pharma marketing, and clinical data management. So moving to the next slide. Here I welcome the founder of Global Pharma Academy, Amit Kumar Mane. Education, he has completed M Pharmacy and MBA. He has 13 plus retail, wholesale, international export knowledge in pharma sector. He is the owner of Malan Medical and Distributor Pune since 2013. He is the trainer for retail, wholesale, pharmacy business management, and he is the host of one YouTube channel, and channel name is Things by Amit. Also, we have the 89,000 plus subscriber on YouTube channel, and this is our education channel that provide the various careers and business opportunities and interview preparation on regular basis. To know the all updates regarding this, kindly subscribe this channel. So moving to the next slide. This is me, Business Development Executive of Global Pharma Academy. Myself, Saune Snehal. Here, I have completed my Bachelor of Pharmacy, and here I resolve the general queries of Global Pharma Academy students and assist them for the daily assignments, mock interviews, and project work. This is my contact number 9322341947, and this is my mail ID globalpharmas516@gmail.com.
If you have any query related to the courses we provided here, you can contact me on this number or through my mail. Okay, so moving to the next slide. Mission and vision. So what we are with the goal of educating every aspirant who want to work in the pharmaceutical sector, we offer education at most affordable price in India. Our goal is to lead the pharmaceutical training market on a global scale, and India should grow into a country known for the innovation and quality. We want to be the first global platform where business executives may select the top personnel in the pharmaceutical sector to satisfy the most recent industry demand. So, moving to the next slide. Benefits of our courses. Our students are trained and nourished under excellent faculties having 15 plus years industrial experience as well as academic excellence. Here, students are rigorously trained to meet the industry requirement. So, moving to the next slide. Why us? Apart from domain knowledge, we provide this like assignment and task, resume preparations, communication skills, presentation skills, mini project, conduct mock interviews, personal development, provide job assistance, conduct examination and doubt clear session. So moving to the next. This is the syllabus of medical coding. First, language of medicine, medical terminology, anatomy, physiology, pathology, lab techniques, etc. Second, ICD-10 coding conventions, general coding and chapter-specific guidelines. Third, introduction CPT for procedure coding terminologies, HCPCS guidelines and modifiers concept. Fourth, HIPAA training, Health Insurance Portability and Accountability Act. Fifth, revenue cycle management and plenty of sample coding scenarios. Moving to the next. If you want to enroll, you have to pay online Google Pay or Phone Pay to 9423272876. After successful of payment, share payment screenshot with your name, email ID, location, qualification, WhatsApp number on WhatsApp to 9423272876, and after that you will get the seat confirmation email, and before one day all students will be added in class group on WhatsApp where all class links and recording share. So moving to the next. Duration and mode. Duration for the course is 3 months. Mode online, platform Zoho. Class date will start from 11 June 2023 and class schedule only on weekends, Saturday and Sunday, and time 4 p.m. to 6 p.m. So moving to the next. It's our various platform. We are on YouTube and channel name is Things by Amit. We are on LinkedIn and name is Global Pharma Academy. We are on Instagram, name is Global Pharma Academy, and globalpharmaacademy.com. This is our website. And apart from this, we also have our own academy channel, and channel name is Global Pharma Academy. This channel, subscribe this channel for getting the more information for our courses. And these are the contacts number. CEO Amit Kumar Mane, 9423272876, and this is my contact number 9322341947. If you have any query related to the courses we provided here, you can contact me through this number. So moving to the next. Thank you. Over to you, sir. Yes, thank you, Snell, for a good presentation. So this is one more information I just want to add, that we started our 3-month online certification course, medical coding. So the fees for this course is, we already given one offer price and basic fee. So basic fee is 6,000. But the offer price is 5,000. It is 4,999 is the price of the course till 31 May 2023. You can enroll with this price, and after that, that the fees will be 5,999. Okay, but apart from that, domain knowledge, skill development, and assistance, 3 information you will get throughout this course, and expert will train you properly. Domain knowledge will be given, resume preparation, that then also test that PPT presentations are also there, so that we will check your communication, presentation
प्रेजेंटेशन स्किल इन बिटवीन. सो अगर आप कोडिंग में करियर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि यू कैन गो लाइक यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन थ्रू आवर कोर्स, which will be definitely we are doing our best to make you more professional. And yes, we will also guide for the placement. So accordingly, whenever there is opening everywhere, we are also sharing कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी कंपनीज होती है, आपको खुद को भी कैसे अप्लाई कर सकते, कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं एचआर से, वी विल टेल यू. एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो शेयर यू द ओपनिंग इंफॉर्मेशन. We have our own placement cell who connect with the organizations, companies who are offering jobs in the medical coding. So they will guide you after the end of the course. Okay? So this is all the course curriculum. आपको अभी भी कुछ query है regarding the sessions, regarding the course, you can ask. Okay? Hello. Yes, please ask. Am I audible, sir? Yes, you are audible. First of all, thank you for organizing such a wonderful webinar. Sir, it's my sincere request. If possible, can you please organize the same webinar on pharmacovigilance? Yeah, before we start our course in the next batch, we will arrange it. Okay, it should be webinar. Okay. In the next month, maybe we can. Yeah, sure. Okay. Thank you, sir. Yes. No? Yes. Yeah, sir. Now, shall we wind up or any questions or queries from anyone? Yeah. We'll just wait. I think Komal, what is your query? You have any query? You raise your hand. No, sir. No, sir. Okay, fine. Okay, we have open हमारा ग्रुप ओपन ही रहेगा जो डेमो क्लास का है. And like about the course information we will share in the group as well. So आपको कुछ भी query आती है, you can connect anytime with us. Okay, so I hope this session will definitely solve your most of the queries from the medical coding. और एक फीडबैक फॉर्म भी हम आपको देंगे so that हमें भी आपका फीडबैक important रहेगा. You can fill up that as well. Okay, and for any connection, any information, we will always there to help. Okay, so last 2 minutes some group hai. If any query you can ask, otherwise we'll conclude this session. And thank you very much to Sonal ma'am for delivering wonderful session, and Snehal for arranging this, and all participants. Yes, Firoz, you have any query? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes. हाँ सर, मैं क्लिनिकल सेस में जाना चाहता हूँ. तो सर अभी भी ग्रेजुएशन के बाद ही फ्रेशर्स में इजीली जॉब नहीं मिलता है क्लिनिकल सेस में, तो इसीलिए हम और दूसरा जॉब करना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देन क्लिनिकल सेस में जाना चाहता हूँ. तो सर कौन सा जॉब बेस्ट रहेगा? मेडिकल कोडिंग का तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता हुआ, तो सर कौन सा जॉब होगा जिसका एक्सपीरियंस काउंट होगा? तो आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं. क्लिनिकल रिसर्च में एज ए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एसोसिएट आप यहाँ पे कर सकते हैं. एंड बिकॉज क्या होता है ना, आप सैस में जहाँ पे वर्किंग है, जिस डेटा पे, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए. डेटा मैनेजमेंट भी थोड़ा टफ है, बट फॉर द एंट्री लेवल. एंड देन आई सजेस्ट कि आप फार्माकोविजिलेंस आइदर और इवन MICC एक डिपार्टमेंट होता है, मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट सेंटर. एंड अदरवाइज यू कैन गो फॉर द क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर एंड एसोसिएट, जहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो वर्क होता है, रिसर्च होता है, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको SMO या CROs कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है एज फ्रेशर. सो आई सजेस्ट दोज. बट क्लिनिकल साइंस के लिए ऐसा है कि आपको एटलीस्ट सीखना चाहिए, बेस साइंस तो सीखना चाहिए. Then you can go because it is completely technical domain, so you need to have some prior knowledge. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir.
सर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में भी क्या फ्रेशर्स को लेते हैं क्या, और इजीली जॉब मिलता है क्या, और मेडिकल कोडिंग की तरह सैलरी कितना होगा वहाँ पर? सैलरी डिपेंड है कंपनी टू कंपनी। जैसे कि एक स्टार्टअप कंपनी में आपको 15 to 20 तक मिलेगी, एमएनसी कंपनी में 18 to 25 तक मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सीआरओज में आपको अच्छी मिलती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई एसएमओ है या फिर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा आपको कम मिलेगा। बट एनीवे आपको क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर या एसोसिएट का जॉब है ना, वो मॉनिटर करना होता है अलग अलग साइट्स को। सो ये आपको सीआरओ में मिलेगा, बट सीआरसी का जॉब अवेलेबल होता है वाइडली, जो आपको हर एक क्लिनिकल ट्रायल जहाँ पे होता है वहाँ पे वर्क होता है आपका। जो मॉनिटर करना, स्टाफ को ट्रेन करना, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना, उसका मतलब वो डेटा नेक्स्ट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना, रिपोर्टिंग करना डेली बेसिस पे। सो वो वर्क होता है कोऑर्डिनेटर का। So for that reason, I suggest you to go through the all clinical trial जो phases है उसकी information चाहिए, drug development process की information चाहिए, और वैसे क्योंकि वो तो इंटरव्यू के लिए आपको पूछे ही जाएंगे क्वेश्चंस, तो फार्माकोलॉजी आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, then you can go। बट हाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, any other question apart from this? In Q&A there is question, क्या आप मेडिकल कोडिंग को AAPCP सर्टिफाइड प्रोवाइड करें? नहीं, सी वी आर गाइडिंग फॉर दिस ऑल द सर्टिफिकेशन जो आपको वहाँ पे, एंड बेसिकली ये बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो आपको आईसीडी कोडिंग जो बोला गया है ना, दिस इज दिस इसी कोडिंग के इस पे फोकस रहेगा। ओके, सो इसके बेसिस पे आप जॉब तो पा सकते हैं, एंड सर्टिफिकेशन के लिए एक एग्जाम है, इसका प्रिपरेशन आपको यहाँ से हो जाएगा। ओके, बट सर्टिफिकेशन के लिए क्रैक एग्जाम आप ही को करना पड़ेगा। वी विल प्रोवाइड स्टडी मटेरियल एज वेल इन दिस कोर्स। ओके, सो जो डिक्शनरीज होती है उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रायर लेवल पे आपको जरूरी है, ये हम प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स में। Okay, so this will guide you for after even completing the certification as well. Yes, thank you all of you for joining. Have a good day ahead, and all the best for all of you for your career. ठीक है, अगर कुछ query होती है, you can ask anytime in our group, in our channel. You are like we are always there, fine. So we will conclude this session. Okay, yeah. And thank you all of you. Thank you Sonal ma'am, and thank you all students. Thank you sir. Thank you everyone. Any tips you want to give to our student? I think I have did everything from my side. Yeah. Okay, so all the best to all of you. Yeah, all the best guys. Bye.